कोई नहीं, आप यहीं बैठ के ले लो। हाँ जी, ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, ठीक है, कि चिल्ड्रन वेयर की इम्पोर्टेंस क्या है फैशन डिज़ाइन के अंदर। इट्स सेम लाइक इस तरह से है जैसे आप वुमेन वेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, मेन वेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, सेम इज़ द केस विद चिल्ड्रन वेयर, ठीक है। चिल्ड्रन वेयर की हर कलेक्शन को आपने उसी तरह से फोकस करना होता है जिस तरह से आप किसी वुमेन वेयर की या मेन वेयर की फैशन कलेक्शन को अडल्ट की जो है ना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को मूड बोर्ड जो है ना उसके थोड़े से, क्योंकि आप लोगों के मूड बोर्ड कभी कभार बहुत वीक होते हैं। मैं आपको मैनुअल मूड बोर्ड की जो है ना एक दो वीडियोस दिखा देती हूँ, ज़रा वो चेक करें आप लोग। और उसके बाद अभी स्केच बुक्स खोल के बैठे हुए देख रहे हैं कि आप लोग कितना कितना काम कर लिए। Today I'm going to share with you this how we'll tell you on this video what my inspiration is for the next collection. But yeah, I wanted to share with you, this will be like a mini series, and this video specifically will be the 6 steps for a mood board. I hope you enjoy it, guys. Okay, so the first step for a mood board is to brainstorm. In a piece of paper, write down your inspiration, what it is. In my case, it's the Disney movie Cinderella. I absolutely love Disney, and I love this movie in particular. And just write down any word that you think of to describe your inspiration, or just a bit pops up to your mind when you think about your inspirations. For example, when I think about Cinderella, I think about the glass slipper, kind of reminds me of crystal. When I think about crystal, I think about the agility and like ये जो मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को एक्सरसाइज करवाई थी सिनोनिम्स वाली, वन वर्ड लें उसके सिनोनिम्स लें। सेम इज़ द केस विद कि अगर आप एक वर्ड पिक करते हैं तो उससे रिलेटेड आपके माइंड में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जितनी भी चीज़ें आती हैं, लाइक जितनी भी है वो सारी सारी राइट डाउन कर लो। ये ऐसे है कि जैसे आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, सारी की सारी चीज़ें एक पेज डाल लिख रहे हो। उसके बाद आपने इन चीज़ों पर रिसर्च करनी है। तो जब रिसर्च करेंगे तो फिर कैसी कैसी चीज़ें निकलेंगी वो आपने देखनी है कि वो कैसे रिसर्च करती है। चेक करें इस वीडियो के अंदर। Guarantee give me a sort of dimension, look, and a word that I really like is the concept is layers. And also another. नबिया, आप उधर से अली को बुला लें। अली बैठा है, उसको कोई प्रोजेक्टर ऑन कर दे। Seeing the really like from the movie, the originals when she's cleaning the marble stairs,
ash, like connected to blurs, so once again, grays and whites, blacks. And you start writing down all these words that will help you to build your inspiration, help to tell a story. Next step, so step number 2, is to choose your keywords. So on all of those words that you just brought down, go ahead and choose the ones that you really would like to use to describe your collection. So, for example, I really like the word layers. It actually showed up in more than one of my board of ideas. So I'm sure I will use that in my collection. And on the side, you can start drawing a few little ideas that can help you start building that story. And the word I really like was the word transparency and like see-through materials. I'm thinking to use kind of lightweight materials and also the embroidery. So I really want to use embroidery into my collection. I think it will give a very nice detail to tell the story that I'm trying to tell. And also the stitches that I want to use in embroidery be like ones that you can see through. And once again, show the layers. And the third step that I want you to do will be the image search. So you can use Google, you can use Pinterest. I really like Pinterest, I think it's a very good tool. And you can search for those keywords or just images that will help tell your story. So for example, if I'm searching for specific words, it's like delicate or feminine, I like to use the word aesthetic straight after, so we can use the sort of image that I want to use for my mood board, or you can search for like crystals and objects that will help tell you the story. As soon as you have like those a few images selected, you can start building like that file of imagery that will help tell the story. I keep saying this, but it's very important that you can tell voice inspiration without without actually talking your imagery. अच्छा, जो उसने कीवर्ड लिखा और सामने उस पे सारे उसने इमेजेस सर्च कर लिए, ठीक है? This is how you make a mood board. For you. So you can see like my Cinderella file is done, and the images kind of look like they all look whites, like grays, like blues, like pinks. It kind of has some symbols that I potentially use for my collection, and materials. Sorry. The first step is to do a collage. I mean, I find this quite projector entertaining and it's fun to put your hands to work. You can print off some images, small, big, as you want, and start placing around your sketchbook. You can also put this digital, and you'll see that I'll also put digital later on, but I like to do this step manually as well because it kind of gives an ability to play around with the images and maybe in the future I might even stick some fabric into there or some stitches that I want to use one. When you have your image selected and you're sure you want to use this once, you can go ahead and stick it to the paper and play around a little bit with it if you want to, and then you see your mood board start getting into shape. And then you can put it into your sketchbook. I really like to keep everything in order and will help me to make sure everything is going as it should. The fifth step is to start searching for colors, details, and shapes you potentially use into your collection. So I like to use tracing paper and just trying to copy some details on my mood board that I potentially use in the garment. So for example, on the right side, you see that I have like a white paper with some volume on it. I really like this idea, and I would like to kind of explore it with embroidery into the garments. The gloves also is a very delicate and feminine touch that I would like to replicate in my collection. The movement of that fabric running into the marble here, lightweight, soft hand. I really like to use the collection. And the crystal and transparency that I mentioned, the crystal gives, once again, layers. Some details you can copy into the garments. And then another thing that I really like to do is to start exploring the colors of the mood board. So just copying on top of the mood board the colors that I see. So for example, I see some light beige, some light pinks, grays obviously is very prominent, and white, and we start playing with it. The sixth step
is to go digital. And as I mentioned before, I really like to read the manuals. That I think it's just like this gives a more professional and knit look. And you don't have to do this if you want to, but as I said, I just think it was a little bit more professional, and you actually can play a little bit more with the imagery because you can change colors. So I use Photoshop and Illustrator a lot. So I'm used to it. If you know, like I really recommend to start learning this. A lot of things on internet that you can access for free. Start learning those skills. I think it's very important, especially if you want to work in the industry. In the industry, I mean, working for somebody else. It's a very important skill that a lot of people ask for. So yeah, you can play around with the images. I actually ended up adding one more image to my Moodboard that I had on the paper version. And honestly, the way that I do my Moodboards, I don't really play a lot with like changing the images a lot or do fancy smooth transitions. Like I just like it very almost like feelings of collage but digital. I wanted to use the carriage at the beginning, but I ended up not using it. So it was too much visual information. But all the images that I select kind of tell the story that I'm trying to tell, which is you have the marble stairs running around after midnight, you have the moon with a head kind of thinking midnight, you have the birds, you have the crystal that resembles the flip and the glass slipper, and all of these little details start telling a story. And once you have your Moodboard done, you can start playing around with colors. And on YouTube, it's much easier to do than actually the paper version because you can actually select the color of the Moodboard and then copy it to like a circle square, whatever you want to use it, and glass strip, pencil, whatever you want to use it. I chose to use circles for this one. I ended up with 5 colors. Some of them will be like the main colors, some of them will be like more secondary colors. So like the white and the gray, I really want to have it as the main colors, and then the other like the light pinks and beige and the dark gray will be like the secondary color. And your Moodboard is complete. So this is more or less what it looks like afterwards. As I said, we have something that really love about this Moodboard is the wallpaper and door and details of greenery and the very lightweight fabric on the top left. हाँ जी, अब ये इसके अंदर उसने मैनुअल भी काम किया और डिजिटल भी काम किया। डिजिटल भी उसने बता दिया कैसे करना है, मैनुअल भी कैसे करना है। आप दोनों को मिक्स करके करेंगे तो बहुत अच्छा एक मूडबोर्ड बनेगा आपका। ठीक है, तो ये अब बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी, अभी भी आप लोग अगर अच्छा ना बने तो मैं आप क्या कहूँ आप लोगों को। इसके अलावा और क्या बताना रह गया? आज मैंने आप लोगों की असाइनमेंट मार्क कर देनी है, कुछ तो मैं मार्क कर रही हूँ, लोगोज वाली तो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो मैंने अपलोड कर देने हैं आज और कल में आपके ऑलमोस्ट सारे मार्क्स। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। और सेकंड थिंग ये कि आज आप सब लोगों ने आना है वैसे मिड के लिए, तो अपना जो है ना इलस्ट्रेटर के जो है ना वो सेटअप अपने लैपटॉप में करवा लें आप लोग। हाँ जी, कोई बोलेगा और बताएगा हाँ या ना में? हाँ जी, इकरा उस्मान, क्या समझ लगी, क्या बताया मैंने आपको? चलो इकरा की तो एब्सेंट लग गई। मानूर आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी मैम, आप कितने बजे तक ऑफिस होंगे? हाँ जी, क्या काम है आपको? मैम, थोड़ा सा काम है वहाँ, वैसे भी मैंने आना है, मैं ऑफिस आके बात कर लूँगी आपसे। चलिए ठीक है, मैं हूँ अभी फिलहाल। ओके, 2 बजे तक होंगे आप मैम? हाँ जी 2 बजे तक होंगे आप ऑफिस? हाँ जी ठीक है मैम, मैं आती हूँ। 2 से ऑनवर्ड क्लास भी चल रही है।
मेरी ऑलमोस्ट सारी 4:30 तक आज क्लासेस हैं। सॉरी मैम, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। 4:30 क्लासेस हैं 4:30 तक। ओके। हाँ जी हफ्सा, जरा चिल्ड्रन बोर्ड दिखा दे मुझे अपना सारे। हफ्सा बताएं कितना काम किया आपने? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी कितना काम किया? वालेकुम सलाम। मैम मेरा ऑलमोस्ट सारा हो गया, मैं बस अपलोड करना रह गया। दिखा सकती हैं आप मुझे? ठीक है मैम। आमना माजिद आप भी दिखाएं। गुले हूर आप भी, हिना इदरीस, इकरा, मानूर, मायरा, मलाइका, हफ्सा, नायाब, हमारा, सारे ज़रा अपना काम दिखाएं मुझे, किसने कितना कितना कर लिया। मैम जी मैम मैंने मेरा हो गया सारा काम, मैंने अपलोड भी कर दिया हुआ है काम। सारा हो गया, चिल्ड्रन बोर्ड भी हो गया, टेक्निकल भी हो गया, टेक पैक। जी मैम, जी मैम, सब हो गया, मैंने अपलोड भी कर दिया हुआ है। चलें ठीक है। अच्छा मैम, मैंने पूछना था, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए जाना है तो उधर मैम को मिड सबमिट करवाना है, तो मैं लीव कर सकता हूँ मीटिंग? हाँ जी कर दें लीव। थैंक यू मैम। ओके। चले अगर आप लोगों ने अपलोड कर दिए तो मैं सबका काम चेक कर लेती हूँ, और फिर जिसका नहीं है मैं उसको ईमेल कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों की आज ही डेडलाइन है हर काम की। चले ठीक है, मीटिंग में लीव कर रही हूँ, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स में जल्दी आप लोगों को जो है ना वो शेयर कर दूँगी। चले ओके।